Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. आप सब लोग कैसे हो? बस मजे कर रहे हैं घर में। बढ़िया। बहुत बढ़िया। लॉकडाउन कैसा चल रहा है सभी का घर पे? Actually, we are in unlock now. हाँ, वो अनलॉक तो चल है, रहा है। बट स्टिल अभी तो कॉलेज स्कूल्स कहाँ खुले हैं, तो स्टिल अभी तो हम लोग घर पे ही है ना। Yes, we are missing our college. हाँ, एग्जैक्टली। बट ऑनलाइन भी अच्छा है। हाँ, ऑनलाइन के तो मजे अलग है ना, हम इजीली कुछ भी कर सकते हैं, क्लास की जाने की टेंशन कहाँ होती है। वो तो ऑफलाइन में दिक्कत होती है। क्लास में कुछ आता भी है। अरे अब हम इधर तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लास भी अटेंड करते होंगे। अभी किसी का लेक्चर नहीं होगा क्या? आई गेस तो नहीं होगा। हम भी छोड़ के ही आए हैं। सबका यही हाल है, सब यही करते हैं। अरे आप लोग ऐसे चुप मत रहो, अगर आप लोग को बोलना नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी अपने इमोजीज के थ्रू थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो। डोंट क्वाइट बी लाइक दिस। बाकी यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे ना? यस। यस। कितने हैं? एक बार थम्स अप शो करना। यस, थम्स अप कुछ भी। Yes, ma'am. I am in FY. अरे नाम मत बोलो, यू कैन कॉल मी बाय नेम। ओके। स्ट्रेंथ तो अच्छी दिख रही है फर्स्ट ईयर वालों की। वेल गाइस, आप लोगों को कैसा लगा इंडक्शन प्रोग्राम? ठीक था। सिर्फ एक ही का फीडबैक आ रहा है, बाकी सबका? बढ़िया। सच्ची में बहुत बढ़िया था। नो में बोरिंग था। क्यों, तुम लोगों के लिए सब कुछ तो नया नया था, तो इसमें क्या बोरिंग? एक्सपीरियंस तो शेयर करो। 15 दिन क्या किया? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बहुत बोरिंग था। ओ यार, आई नो इट सक्स बैडली। और वैसे क्या क्या सिखाया इंडक्शन प्रोग्राम में? क्या बोल रहे हो भावदीप? इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन कुछ एक्स्ट्रा पॉलीमरेज एक्टिविटी? है। ओके ओके। टाइम पास ही था पूरा, ओके। क्रिएटिव आर्ट सब्जेक्ट? मैम हमारे टू के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम है क्या नहीं? ये क्या बोल रहे हो, फिर से बोल सकते हैं? हमारे डी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम है? मतलब किस टाइप का प्रोग्राम, इंडक्शन टाइप वैसा? यस यस। आई थिंक उनके लिए तो नहीं होता, उनको तो डायरेक्टली एकेडमिक ईयर के साथ चालू हो जाता है, D2D वालों का तो। ओके ओके ठीक है। ओके वरना ओके। फर्स्ट ईयर की फ्रेशर पार्टी में मजे कर लेना।
हाँ वैसे भी तो अभी नेक्स्ट ईयर फ्रेशर पार्टी तो होनी ही है, D2D वाले के लिए और फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो बेस्ट है। एंड हमें ओरिएंटेशन मतलब इंडक्शन प्रोग्राम में मैम जैसे वो ग्रामर होता है और फिर पॉलीमर्स है उन सब के बारे में भी हमें जानने मिला। फिर हमें उसके बारे में homework भी मिला, हमें खुद का इंट्रो कैसे करना है वो भी जानने को मिला हमें। अरे वाह, ये तो वो सही है ना, आप लोगों ने अपने बारे में इतना कुछ सीखा है आप खुद के लिए भी। यस मैम। बाय द वे प्लास्टिक करके मुझे आपका नेम शो हो रहा है, आपका नाम क्या है? दर्शन शर्मा फ्रॉम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके ओके। सो आपकी 12th की जर्नी कैसी रही? बढ़िया थी मैम। ओके, तो LD तो शायद देखा नहीं होगा ना अभी तक तो आप लोगों ने। नो मैम। ना नो मैम, मैम खाली ये एडमिशन था, एलडी में एडमिशन तो। ओके ओके। तो एक्साइटमेंट तो होगी ना कि LD देखनी है, LD के हर जगह पे घूमना होगा, ये तो सभी का होगा राइट ना? यस मैम, नंबर 1 कॉलेज है तो उसमें ऐसा तो क्या है वो देखना था। हाँ, आप लोग वैसे क्या कहते हैं, हॉस्टल लाइट हो या फिर अहमदाबाद उधर के रहने वाले हो? मैम मैं हॉस्टल तो है। अहमदाबाद। हॉस्टल है हॉस्टल। अरे तो जो अहमदाबाद वाले उनके लिए तो इजी है ना, वो तो जाके कभी भी जाके देख सकते हैं। यस मैम। बहुत बढ़िया। ये तो हॉस्टल लाइट वालों के लिए सिर्फ प्रॉब्लम है, स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के लिए यार, उन्होंने बस नाम ही सुना है नंबर 1 कॉलेज, लेकिन देखना तो बनता है ना एक बार। आप लोगों ने यस तो मैम। वर्चुअल टूर तो देखा ही होगा LDC का यार, कितना औसम था ना। मैम एलडी में वॉक्स प्यूपिल और उड़ान, वो उसके बारे में हमें कुछ बताओ ना। उड़ान? हाँ, उड़ान और वॉक्स प्यूपिल, वो क्या क्या है उसमें, क्या होता है? वॉक्स पॉपुली एक क्लब है LDC में जो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरेक्शन होता है, फिर आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करता है। तो वॉक्स पॉपुली एक डिफरेंट क्लब है जो ऐसे सब एक्टिविटीज कंडक्ट करता है। मैम तो ये हमें वॉक्स पॉपुलर के लिए मैम हमें 3-4 गेम्स की लिंक आई थी, जैसे मिनी मिलेटिया है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, चेस है, तो मैम उसमें करना क्या था? अरे आप लोगों को ज्वाइन करके उसमें, कितना था? हाँ ज्वाइन करके वो आपको गेम खिलवाएंगे एंड जो जीतता है उसे ई सर्टिफिकेट या फिर जो भी उनका उनकी साइड से जो भी हाँ, क्राइटेरिया होगा वो आपको देंगे, ऐसा है। वो आपको देंगे। ओके मैम ओके। फिर ये GTU के पॉइंट्स का भी समझाओ ना। अरे एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको GTU 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं पूरे निकल। साल, 4 साल के अंदर, ओके ना? तो टेक और नॉन टेक इवेंट्स को मिला के 100 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करना होता है। सो आपको जितने भी कॉलेज में क्लब्स ना कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है ना, सो आपको हो सके तो जितना हो सके आप पार्टिसिपेशन अपना देना। सो इसके जब भी फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID आपके फैकल्टीज देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपने वो GTU पोर्टल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन किया, जो भी आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, सर्टिफिकेट जो भी आपको मिलता है वो संभाल के रखना सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सर्टिफिकेट से ही आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। तो फिर आपको फिर वो जब वो पोर्टल खुलती है तो आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। यार तुम लोगों के फ्रेंड्स अगर बाकी है आना तो उन्हें बोलो जल्दी आने के लिए। नहीं नहीं, मैं वॉक्स पॉपुलर के साथ ज्वाइन नहीं हूँ। यस तेजस, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी अहमदाबाद की वैसे तो नहीं हूँ, बट हाँ सच बोलूँ अहमदाबाद तो बेस्ट प्लेस है, और उसमें भी अगर LD कॉलेज उधर है तो यार जन्नत है जन्नत।
गाइस अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ज्वाइन होने के लिए जल्दी, हम थोड़ी देर में ही चालू करने वाले हैं अपना प्रोग्राम। Okay, so good afternoon everyone once again. Before I introduce you about us, I have a small quote for you. University life gives much more than just a degree. So just get ready to grab all those opportunities. Hey everyone, I am Shruti from Textile Department, second year. And hello everyone, I am Drashti from IT department, third year. We are here as a member of LA and we welcome you all to LA Orientation 2K20. So, firstly, I would like to congratulate you all for getting admission in such a prestigious institute. You all are now an integrated part of LDC. Yes, so guys, if you have any query or any issues, just write down in the comment box or unmute yourself to let us know. So, आप लोग भी एक्साइटेड हो गए ना कि ओरिएंटेशन में ऐसा क्या होने वाला है, हमें क्यों बुलाया गया है? सर एक्चुअली ला वर्क શું કરે છે? हाँ, हम लोग अभी बताने वाले वही हैं। बताने वाले हैं। रुको रुको आराम से। सो आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि हम लोगों को क्यों बुलाया गया है, हम एक्चुअली ला है क्या, राइट? Yes, guys. Yes. Okay. So without beginning, I would like to say a story to you all. So पहले सुन लेना and then just there will be a question at the end of that. So think on it. So the thing is that we are having two friends, let's say Sam and Rich, and they are given a task to cut a big piece of rod, okay, as per a specific sample. They need to cut that rod, and they were given same tools and same equipments to use to complete this task, okay, in the same time. So they both started working on this task, and after some time, they were asked to bring the collection of their samples. So they begin. So basically, the working strategy is quite different. Okay, Sam was working like he worked continuously for all the time allotted for let's say 8 hours. So he worked continuously for 8 hours, and then he was ready with his sample. On the other hand, Rich has worked on cutting. Rich has focused on cutting that iron rod for 50 minutes. 50 minutes out of 1 hour, and the remaining 10 minutes he used to take a rest. Okay, so in this way he completed his task, and at the end of 8 hours, they were surprised to see that Rich was able to collect some more of samples instead, in spite of working for less hours. Okay, so you are a students of math, so તમે લોકો ગણી શકો છો યાર કે મતલબ 8 hours માં એક દર કલાકે 10 મિનિટ કાપતો જાય, then he has a loss of 1 hour, right? So in spite of that, he was able to collect more samples. So think on it કે આવું કેમ થયું, why? Okay, and write down your answer in the comment section, or else I will be answering you this question at the end of this session. Okay, everyone, are you with us? Yes. Okay, okay. चैट बॉक्स में अपना रिस्पांस देते रहो, जैसे हमें लगे कि यस यू गाइस आर विद अस. ओके. Okay, okay. So without much delay, let's begin the orientation 2K20 of LA. So once again, I would like to welcome you all. So we all know that a good journey begins with a good institution, right? And you all are at a great college. So yes, this college will provide you ample of opportunities, chances, and different exposures that ultimately lead you to a heaven. What's it, Shruti?
So Shruti, your mic is off. You're is mute. mute. Yes, I absolutely agree with you, Dusty. Yeah, yeah. So college journey is like pushing ourselves to make us out of our comfort zone and to build up a good career. So moving ahead, I would like to say that because of COVID situation, we all know that we are not able to organize this orientation at college. So we are organizing this here on Meet. So hope you guys enjoy and being frank, just be interactive with us, be active in comment section, or you can unmute yourself if you want. So do you know what is alumni, guys? You have joined this meeting to orientation of LA. So, do you have any idea about alumni? Anyone? पहला थॉट क्या आया होगा सोच कर कि एलुमनाई है, कुछ तो वर्ड को सोच के कुछ तो स्ट्राइक किया होगा ना, समथिंग. कृष्णा, यस यू आर राइट. Alumni Association. Okay, so that's about LA. But what is alumni? Alumni no basic meaning શું થાય? તમારા મતલબ what's the first thing that comes in your mind when you hear to this? The one who have studied in the college. Not Yes, exact. yes. So हाँ भावदीप, आपने सही तो बोला एलुमिनाई के बारे में, लेकिन एलुमिनाई क्या है? Okay, so Shruti will go with that. ओके, चलो कोई बात नहीं. ऐसे आप लोगों में से कुछ ने सही भी आंसर दिए थे और कुछ को तो शायद पता भी नहीं है. ओके कृष्णा, सही. कृष्णा, यू आर राइट. पास आउट स्टूडेंट्स. वेल, आपने अगर एलई में एडमिशन लिया है, आपने 4 साल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एलुमिनाई कहा जाता है. ओके, सो अभी आप लोग इतने दिनों से तो सर्कुलर तो आया ही होगा आपके ग्रुप में कि ला का ओरिएंटेशन होने वाला है, ला का ओरिएंटेशन होने वाला है. आपने कमिंग सून का वीडियो भी देखा होगा. सो आप लोगों को पता है ला स्टैंड किसके लिए करता है? You can answer in the comment section. Keep the chat box rolling. अरे एल्यूमिनियम की बात नहीं हो रही है. Yeah. अभिषेक, या यू आर एब्सोल्युटली राइट. वैसे तो मैंने देखा कि सभी ने ला का तो फुल फॉर्म बता दिया. वेरी गुड, आप लोगों के साइड से रिस्पॉन्स बहुत सही है. सो ला स्टैंड्स फॉर एलडीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन. ला वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट आईएएस ऑफिसर Dipesh Shah, our senior vice president, Anand Patel and Atul Shah, and our faculty coordinator of law, Mrunal Chaudhary, and our faculty guide of law, Major Dr. C.S. Sangvi. So, let's start with the introduction of law. Law is an independent body that nurtures lifelong relationship with and among current students and alumni of the college. From the very beginning, graduates of the LDC have wanted to stay connected to their esteemed alma mater and each other. Upon its first commencement in 1996, LA was established with the aim to promote knowledge, stimulate thinking, and help LDC to provide excellence in the field of engineering. So, up to here, guys, anyone have any query? So just raise your hand or unmute yourself, or you can write in the chat box too. Okay.
So we will move further. Here we are here with a small documentary which will introduce you to La and its working. वो यार So hope you enjoyed, guys.
कैसा लगा आप सभी को? गुड गुड। या ऑफ कोर्स ये टीजर ही है आपके लिए, छोटा सा टीजर हमने आपको प्रेजेंट किया है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द विजन एंड मिशन पार्ट। So yes, guys. Now we will carry our presentation on with vision and mission. So, do you know what is vision? Like, कई ideas है vision के बारे में? Okay, so I will carry on with this. So whatever we do, we dream, we work, we follow is just as we want to achieve something, right? So guys, તમે લોકો LDC join કર્યું છે because you expect yourself at some position, at some designation in કોઈ in any company या फिर कोई business, right? So that's the vision of for yourself. In the same way, the vision of LA is to promote fellowship among alumni, to exchange ideas, spread knowledge, stimulate thinking, and help the students of college to provide excellence in field of engineering. Now Shruti will carry on with mission statements. Our first mission is maintain contact. To maintain contact with among past students, current student and teaching staff of LDC means अगर आप लोग LD में एडमिशन लेते हो तो इट्स मीन कि आप प्रेजेंट में आपके सिर्फ कांटेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि जितने भी एलुमिनाइज है वो आज भी हमारे एलडी से कनेक्टेड है। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर के लिए उनसे गाइडेंस चाहिए होगा, आइडिया चाहिए होगा कि फिर कोई भी चीज इनिशिएट हमें करना है, कैसे करना है, वो सब के साथ भी अगर आपने अपना कांटेक्ट मेंटेन करके रखा है तो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो हमें पढ़ाते हैं हमारे फैकल्टीज, प्रोफेसर जितने भी हैं, तो अगर आपको उनसे भी गाइडेंस लेना हो तो उनसे भी ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आपने 4 साल कॉलेज तो डिग्री लेके चले गए, लेकिन क्या पता कि हमारा कांटेक्ट रहेगा कि नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से पास आउट भी होते हो तो आपके कांटेक्ट आपके प्रोफेसर के साथ हमेशा मेंटेन ही रहते हैं। Yeah, and the second mission of LA is global standards. तो आप सबको तो पता ही होगा यार, like competition हर जगह पे है, right? So I would like to mention here one of the major competitors in the world, that is Facebook and Google, मतलब टक्कर वाली competition. So yes, competition is there at each and every steps, each and every moment. So LA tries its best to maintain the position of LTC at global level in terms of technologies, equipments, and also work to enhance different facilities within the campus so as to provide better standard of education to all the students. Yeah, exactly. Now the third mission is industry interaction. To establish interaction with industry for the benefits of students. Guys, अगर आप लोगों ने पूरे 4 साल की लाइफ में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ ली तो आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है? रिप्लाई करो, बेनिफिशियल है कि नहीं है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से? Obviously not. ऑफ कोर्स नॉट। सो आपने जो थ्योरी पढ़ ली उसे आप इम्प्लीमेंट किधर करोगे? आपको कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। हमने ये थ्योरी पढ़ ली कि इस मशीन का वर्क ऐसे होता है, लेकिन हमने वो मशीन को चलाया ही नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, राइट ना गाइस? सो हमारा कॉलेज आपको इंडस्ट्री विजिट के जाने के लिए भी प्रोवाइड करता है कि आप वहां जाके अपने फील्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। Yes, exactly. It's interesting, right? And next mission of LA is financial assistance. So think like if you want to establish a startup or you have any idea to implement a project, you require any technology, the first thing that you require is funding, right? So LA provides financial support to the students so that they can enhance their knowledge, their experience. They can organize different events and set up different projects by the financial support of LA. ओके, सो अभी तो फंडिंग हमें मिल गई, बट क्या फंडिंग का, हमें फंडिंग का क्या काम है? हमें फंडिंग का कुछ तो इम्प्लीमेंट कहीं पे तो करना पड़ेगा ना, सही कहा ना मैंने?
सो नेक्स्ट मिशन इज कैंपस डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स है, एलुमिनाइज है, वो आज भी कनेक्टेड है। सो हमारे कॉलेज में अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो या फिर नीड्स हो जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो उन सभी प्रॉब्लम इश्यूज को हम एलुमिनाइज एनालाइज करते हैं एंड वो उनसे जितना हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करते हैं कि हाँ ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके हम स्टूडेंट्स के लिए। Yes. So this is all about vision and mission. આ તો બહુ theoretical હતું, right? But here, now we are with some interesting thing for you. So are you all ready, guys? Yes, ma'am. Okay. Okay. So yes, we are here with a small quiz for you. The question will be displayed on your screen, and you can write the answer in the chat box and or unmute yourself, right? So the first question for the quiz is right there on your screen. So the question is, it's a multinational IT company that was started in the garage by two electrical engineers from Stanford University. Okay. And an interesting thing about this is its name that Apple. पढ़ लो पहले पढ़ लो because it's having two names, right? Yes, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या है। Yeah. Guys, don't unmute So- yourself. Chat box में आप आंसर दे सकते हो। Yeah. So it's having a name. They toss the coin to decide whose name should come up first. And you have laptops and PC of that company. So think on it, guys. No, नहीं, Dignesh, it's not Dell. Hemraj. Yeah, it's HP. So the answer to this question Hewlett-Packard. is very well said, guys. It's Hewlett Packard. So do you know what's the purpose of introducing this thing to here? That is, I am glad to introduce you, Sir Vyumis Joshi, who has served as Vice President at HP Operations and Executive. He has also served as 3D System at CEO. He has also served as 3D System and also as a Vice President as Hewlett Packard Company's Imaging and Printing Group. He was also members of HP's Executive Council. And guys, I'm so glad that to introduce you to himself as he has completed his bachelor's in electrical engineering from our college, right? So now we are here with another question for you. The question is right there on your screen. It's quite easy. आप लोगों को पढ़ के ही आ जाएगा ये तो. It's simple, right? So the question is, how do you relate Salman Khan and Ranveer Singh with one of India's leading pipe manufacturers? Tricky chair. Think on it. Bollywood personalities. जो आप डेली देखते हो इसे। Yeah, guys, think on it. You can guess. It's okay. It's completely fine. Yeah, you can guess the answer. Astral. Yes. Exactly. So here is the answer for this question. That is Astral Pipes. And do you know, guys, about Sir Sandeep Anjinia? He is an Indian billionaire, businessman, entrepreneur, and achiever and founder of Astral Pipes. He started his journey as a project engineer from Cadila Private Limited, and with his intelligence, he has opened his own company. You can just imagine, guys, and I'm so glad to introduce this personality to you all as he has completed his chemical engineering from our college. It's quite amazing, right? Now we are here with the next question for you. That's right there on your screen. So just have a look. Apart from two of its founders, this company even had an unofficial third founder. A company with three founders named Scott Hazen, the lead programmer who wrote much
of the code for its web page, and then we see how it's related to coding, right? Computer and IT students, you can get to this. So which company we are talking about? That has become a dream company for engineers all around world. It's a company. Come on, guys. Okay. Okay, yeah. Our dream company. So the answer to this question is Google. So yes, here we are here with our alumni, Ma'am Pawnee Divanji, who has served as Vice President of Engineering at Google and took the initiative to represent coding among kids, right? She has started her career as a software engineer at Sun Microsystems, and she was an important member of the team who has contributed in developing Java language. You can think about this, right? And yes, I'm so glad to introduce this personality to you all, as she has completed her computer engineering bachelor's from our college. That's just amazing, right? Now Shruti will carry on with other alumni. Okay, so our next question is, identify this famous personality whom we don't think need an introduction. Oh God, वाह यार, तुम लोगों को तुरंत ही सही है. Yes, you are absolutely right. Answer is PM Narendra Modi. Guys, I'm so glad that I'm going to introduce our honorable IS officer Hardik Shah. Hardik Shah is one of the youngest IS officer to be appointed as private secretary to PM Narendra Modi and will succeed another Gujarat cadre IS officer Rajiv Topno. Hardik Shah started his career as a junior engineer in the Gujarat Pollution Control Board (GPCB). He is credited with making GPCB's operation modern and transparent. He completed his B.Tech from LDC and was selected for IS in 2010. Hardik Shah was also behind the PM's national plan to control the plastic menace and environment conservation. So our next question is, identify the Facebook or Twitter handle from the cover page. फेसबुक तो आप सब लोग यूज कर ही रहे होंगे गाइस. ट्विटर भी हर कोई करता है. हाँ, गुजरात टूरिज्म इट्स quite near. Yes. No, it's not Kutch. Think about it. Yes, Keur, you are right, CMO. So our right answer is Chief Minister's Office. I'm going to introduce Honorable IS Dipesh Shah. गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो हमारे ला के प्रेसिडेंट है वो और कोई नहीं, आईएएस ऑफिसर दीपेश शाह है. यस. सो सोचो, जो सीएम के ऑफिस में इतने रेप्यूटेड सर बैठ रहे हैं वहां पे, वो आज भी हमारे एलुमिनाई से आज भी हमारे कॉलेज से कनेक्टेड है, और जब भी हमें जो भी हेल्प चाहिए होती है वो हमारी हेल्प भी करते हैं. इन्होंने अपना सिविल इंजीनियर हमारे कॉलेज से कंप्लीट किया था और ये 1982 टू 1986 के बैच के स्टूडेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, established nearly 50 years back. This industry is one of India's well-respected manufacturers of high-quality crushing and screening equipments. It hails from Mehsana district of Gujarat and is a flagship company of the same group of industries. Guess the name?
You can go with the logo, guys. It's there in the picture. And ગુજરાતની જ છે યાર, આપણને તો ખબર હોવી જ જોઈએ. Anyone? No one? Yes, Krishna, Kinjal, Dignesh, you are right. Yes, It yes. Apollo Industries. I'm going to introduce our Honorable Mr. Anand Patel. He is the director at Gujarat Apollo Industries Limited. It is the largest and most trusted manufacturer of the construction and mining industry equipment in India, comparable to some of the world's leading manufacturers. Mr. Anand sir completed his mechanical engineer from LD in 1983 and pursues his master from Stevens Institute of Technology in 1996. गाइस आप लोगों ने तो अभी सिर्फ 6 एल्यूमिनाइज के बारे में देखा है, सुना है, इससे भी कई ज्यादा है. सोचो हमारा सिर्फ ला का कवरेज एरिया सिर्फ थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग है. क्या कहते हो दृष्टि आप? Yeah, absolutely, guys, and it's just amazing. You know, LD में 14 branches है, right? So you can just think, हमारे alumni कहाँ and कौन से field में है. It's just mind blowing. So yes, now we will move ahead in the presentation. Here, we will have a look on past activities which was undertaken by La. So our first activity is La Garwa. Guys, you know that Navratri is like heart of we Gujaratis. So to celebrate with pomp and cheer, La has organized Navratri in the campus premises. Next activity is Career counseling. So guys, you all know કે આપણી પાસે જ્યારે બહુ જ બધા ઓપ્શન્સ હોય ને, બહુ જ બધી ચોઇસીસ હોય ને, we get confused, right? કે કયું સિલેક્ટ કરવું અને કયું નહીં. So the same is with career. Career માં પણ બહુ જ બધા options હોય. But we need to select the particular one where we can focus as per our interest, where we can have future scope, reliability and other things. So yes, for this reason, La organizes career counseling every year so that students can have particular and perfect information about different options available, solve their queries, and they can select the best of all, which is suitable to them, right? This counseling is organized specifically for class 12th A group students. Our next activity that is conducted by La is हेल्थ चेकअप कैंप. गाइस आप लोगों को तो पता है कि हेल्थ इज वेल्थ. अगर आप लोगों की हेल्थ सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना. तो हेल्थ चेकअप कैंप हमारे कॉलेज में लगाया जाता है हर साल. यहाँ पे सिर्फ स्टाफ के लिए हेल्थ चेकअप नहीं होता है कि होता है. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइक हॉस्टलर्स हो या फिर नॉन हॉस्टलर्स हो, उन सबकी हेल्थ की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो हमारे कॉलेज में हेल्थ चेकअप स्टूडेंट की सिक्योरिटी, उनके हेल्थ और वेल्थ के लिए रखा जाता है. Our next activity is સ્વચ્છતા અભિયાન. Guys, COVID માં આપણને cleanliness ની important તો સમજાય જ ગઈ હશે, right? And we all know that cleanliness is next to godliness. So this abhiyan was taken under Swachh Bharat Abhiyan that was launched by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And under this abhiyan, ઘણી બધી activities conduct કરવામાં આવી હતી, which aimed to provide clean, green, healthy and fresh environment so that students can have better learning. And specifically, it provides naturist environment for hosteliers to live, right? So our next activity is ब्लड डोनेशन कैंप. आप लोगों को तो पता होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप तो हर जगह लगता है. जिधर भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उधर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है. तो हमारे कॉलेज में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है. अलग अलग जगह से डोनर्स आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं. और जो भी हॉस्पिटल से हमारे कॉलेज में रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. गाइस, अगर हम जब किसी को कुछ चीज देते हैं, डोनेट करते हैं, लाइक वो जो खुशी होती है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग. और जितने भी डोनर्स होते हैं उन्हें लास्ट में उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए गुडीज भी प्रोवाइड की जाती है. Our next activity is
Exactly. That's just amazing. અરે sports day, yes. So આપણે જ્યારે બી સ્કૂલ ડેઝ નું યાદ કરીએ ને, the first thing that comes in our mind is sports day. Just the amazing. યાર સ્કૂલની memories and સ્કૂલનો sports day is just the amazing, right? We love chess, badminton, cricket और क्या क्या अपन लोग खेलते थे. So guys, આપણે જોયું કે college is not about studies. Students can do all other activities of their interest. So with this reason, La has organized Sports Day where students from all the department, all the year, all the semester, they can come together, play and can have lots of fun. Just imagine, इतने सारे students, ये competition, the cheering and all, it's just mind blowing. यार सच्ची में यार, लेकिन जो स्पोर्ट्स डे में जो मजा आती है ना एक दूसरे को compete करने का, वाह, और फिर जीतने की जो खुशी होती है वो तो अलग ही लेवल की होती है। लाइक यहाँ पे सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सभी के लिए कंपटीशन एक जैसा होता है। सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज काइजन। वाओ, अरे आप लोगों को पता है, जैसे ही मैं काइजन का नाम सुनती हूँ मैं सोचती हूँ मैं भी कब 4th ईयर में आ जाऊँ। हाँ, आई नो कि यहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग यही सोच रहे होंगे ना काइजन क्या है। सही कहा ना? अच्छा ठीक है, मैं कुछ काइजन के बारे में पहले कुछ भी बोलूं उससे पहले आप लोगों के माइंड में क्या स्ट्राइक हुआ काइजन पढ़कर? Anyone? अर्ली ओरिएंटेशन, कुछ बोला था। हाँ कुछ तो बोला था ना, वो तो पता है, लेकिन आप लोग काइजन को, सपोज मैंने काइजन वर्ड पहले सोचा तो मुझे कुछ और याद है कि काइजन समथिंग रिलेटेड टू दिस, समथिंग रिलेटेड टू दिस, ऐसा करके कुछ भी आइडिया, कुछ किसी को कुछ भी है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो। इवेंट है या फेस्टिवल है, क्या है? लाइक पार्टी, यस कह सकते हैं, पार्टी से कम नहीं है। नो खुशबू इज नॉट वर्ड्स नेम। काइट फेस्ट, नहीं, हॉस्पिटल का भी नाम होता है हम जानते हैं, बट वो है नहीं। किंजल, यस, यू रिलेट दिस, राइट, फेयरवेल, राइट, बिल्कुल सही है, बट एग्जैक्टली क्या? ओके। सो यहाँ पे अभी तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं मैं उनको एक एग्जांपल की तरह एक एग्जांपल देती हूँ उन्हें कि लाइक आप सभी लोग 12th पास आउट करके एडमिशन लिया है ना बी फर्स्ट ईयर में। सही कहा ना? सो 12th के बाद आप लोगों को फेयरवेल तो दी होगी कि हाँ चलो हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ के गए तो उन्हें फेयरवेल दे देते हैं। किसी ने अपना फेयरवेल एंजॉय किया है? अंकित ने एंजॉय किया है, खुशबू ने भी एंजॉय किया है। लॉकडाउन में फेयरवेल मिल गया सभी को? सीरियसली? Amazing, yeah, it is amazing. Farewell is most exciting activity. ओके, मतलब नहीं मिला। सो कोरोना, हाँ समझ गए, वही तो मैं भी सोचू कि सभी लोग यस बोल रहे हैं। ओके, कोरोना के बच्चे हम भी है। ओके, कोई बात नहीं, आपने स्कूल में तो फेयरवेल एंजॉय नहीं किया ना, लेकिन हमारी कॉलेज ना एक ग्रैंड फेयरवेल ऑर्गेनाइज करती है 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए। लाइक काइजन क्या है ना कि आपको 4th ईयर में आप जब आओगे तो आपको एक प्रॉब्लम बेस प्रोजेक्ट बनाना होता है कि प्रोजेक्ट बनाना होता है। देन ये 2 दिन का इवेंट होता है काइजन, जहाँ पे फर्स्ट डे आपको आप जो भी प्रॉब्लम दी आपने उसका सोल्यूशन एज अ प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका एग्जीबिशन लगता है। एंड नेक्स्ट डे उसकी चेयर अप पार्टी होती है एज ए फेयरवेल सभी डिपार्टमेंट वालों के लिए। एंड आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है काइजन की कि ऐसे तो सबको पता है कि प्लेसमेंट सेल जो होता है वो 3rd ईयर से चालू हो जाता है, किसी की होती है किसी की नहीं होती है, बट ये काइजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट एग्जीबिशन वहां पे लगा है एंड कंपनीज को अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो आपको अच्छे पैकेज देकर हायर कर लेती है। सो गाइस, है ना इंटरेस्टिंग काइजन? It's really awesome, यार। मतलब सोचो, you have many opportunities. ऐसे बंद मत करो, कीप रोलिंग द चैट बॉक्स। यस, वो जोरदार। Amazing. It's actually awesome because we have ample of options in our college. So now we will go with our next activity and that is tree plantation. So ઘણી બધી એવી કોમ્પિટિશન હોય છે જ્યાં એક ટ્રી સેમ્પલિંગ ગિવન
is given as a gift to the winners. So તમે ધ્વનિતનું અમદાવાદી હશો તો ધ્વનિતનું 3 ઇડિયટ તો સાંભળી હશે, રાઈટ? એન્ડ બહુ જ બધી એવી કોમ્પિટિશન છે. સો હેવ યુ એવર थॉट कि ऐसा क्यों होता है? लाइक ट्री सैम्पलिंग देने के पीछे कोई आइडिया, कोई रीजन? एनीवन? ક્યારે Anyone? કે આવું કેમ? Okay. So I will be carrying on with it. That is, we all know that a tree can nurture a lot of humans, right? A tree is like આપણું એકને બધી જ આપણી નીડ સેટિસ્ફાય કરે, right? So being a winner, this is given as a responsibility to the winner so that he can serve the society. So we all know that trees support the world. અને આપણે જ્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગની સિચ્યુએશન્સમાં છીએ, that trees are our last option, right? So with this concept, La has started this activity of tree plantation, and not just tree plantation, La even works and take care of the samplings so as to provide green, clean, healthy, fresh environments to the students. And even in the COVID situation, this activity was continued by the La members, as you can see in the picture down below. So this is just amazing, right? And our next activity is एलुमनाई रीयूनियन. अभी तो आप लोगों ने एलुमिनाई के बारे में तो जान लिया ना कि एलुमिनाई क्या होता है. अभी रीयूनियन का यहाँ पे मतलब है कि जितने भी एलुमिनाइज हैं उनका हम रीयूनियन मीट करवाते हैं. लाइक जैसे कि आप अभी 12th के बाद पास आउट होते हो, 2-3 साल के बाद तो आपको भी तो मन करता होगा ना कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ मिलो, तो आप एक रीयूनियन मीट करोगे. सभी पूरी 12th क्लास हो या 10th क्लास हो तो रीयूनियन मीट करोगे. उसी तरह हम हर साल एलुमिनाई रीयूनियन मीट करते हैं, जहाँ पे सारे एलुमिनाइज आते हैं, अपने आइडिया, थॉट, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. यहाँ तक कि हम फन एक्टिविटीज भी करते हैं, जहाँ पे वो लोग सिंगिंग, पोएट्री, मिमिक्री, जितनी भी फन एक्टिविटीज है अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो हमें करके दिखाते हैं. एंड दूसरा ये कि सच बोलो ना, ये जो मीट में जब हम जाते हैं ना तो सच बोलो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे कि यार इन्होंने इतने बड़े लाइफ चैलेंज जो होते हैं वो कैसे हैंडल करना है, किस तरह उन्हें टैकल करना है और आगे कैसे बढ़ना है. So our next activity So our next activity is Aagaz. Aagaz is the Tech Fest of LDC, right? And it was recently organized in Jan 2020 before lockdown. It was a 3-day tech fest જ્યાં ઘણી બધી technical and non-technical activities organized કરવામાં આવી હતી. And not just this, seminars and workshops were also conducted. And the main thing is that the seminars and workshops were conducted by our expert alumni. So guys, you can just imagine the experience of learning from one who were just a learner like us some years before. જે અહીંયાથી ભણીને ગયા છે એમની જ પાસેથી શીખવાનું. It's just amazing, right? Technical activities where students were given a platform to showcase their skills and work on the projects of their own choice. And this is just amazing. What's your Shruti? Yes, सही कहा तूने. Next activities लिंक्डइन वेबिनार. आप लोगों को तो मतलब पता ही है ना कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमें कितना कुछ मेंटेन करना पड़ता है. अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनली हमें मेंटेन करनी पड़ती है इन सच अ मैनर दैट कि सामने वाला आपकी प्रोफाइल देख के इम्प्रेस हो जाए. सही राइट कहा ना मैंने? Exactly. तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है LinkedIn, where you guys find for internship portal, job portal of your own choice. If you will maintain your profile, then you will also get job and internship offers. बट पता है ऐसा क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें अपना प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना होता है. एंड वो बहुत ही ज्यादा ही जॉब या इंटर्नशिप के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं. बट तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ला वालों ने लॉकडाउन में एक वेबिनार कंडक्ट करवाया. एंड दिस इज नोन एज लिंक्डइन वेबिनार, जिन्हें होस्ट करने वाले नाइशादी गदानी आए थे. इन्होंने सारे वेज तरीके की हाउ टू मेंटेन योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, किस तरह आपको अपना मेंटेन करना है, कैसे सब कुछ हमें उस वेबिनार में बताया गया था. Guys, La was active in the time of pandemic to help students of LDC.
Yes, and this is just amazing. So next, we will have a look on initiatives taken by La. આપણે જોયું યાર લાએ આટલી બધી એક્ટિવિટીઝ કરી એનું વિઝન આ છે મિશન આ છે પણ તમારી પાસે કોઈ લાઈવ એક્ઝામ્પલ તો હોવું જોઈએ ને. So yes, here is an example for you guys and that is right there on the screen, keepsake welding research. So આ હેડિંગ વાંચીને તમારા મગજમાં સૌથી પહેલા શું વિચાર આવે છે? Anyone in the chat box? હેશટેગ વર્લ્ડ વાળા હેશટેગ્સ મૂકો યાર અહીંયા. વેલ્ડિંગ ક્લાસીસ, એન્જિનિયરિંગમાં વેલ્ડિંગ બ્રાન્ચ હોય? Electrical, yes. Anyone else? Okay, so I will be continuing with it. So Keepsake Welding Research and Skill Development Center, okay. So it was also known as Center of Excellence Welding. It is promoted by Center for Entrepreneurship Development and Gujarat Technological University. And it has established a center in our college. It works so that an individual is provided a platform where one can emphasize on training, research, safety, and skill up graduation on automation welding, right? So this is just interesting. And it offers various certified courses where students involved in automobile, mechanical engineering, research, welding can have on-site training and understanding. Our next initiative is Next initiative taken by La is Computer Lab. La does campus development by understanding and knowing the needs of students. So अगर आप La join करते हैं, then you people now represent La in your department and can survey about the requirements and necessity of your department. Guys, you know one more thing कि जो ये computer lab की जो needs थी बच्चों को उस टाइम पे, so alumni की बैच थी 1983 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे वो, उन्होंने CPU, माउस, मॉनिटर ये सारे रिक्वायरमेंट देखते हुए ये चीज हमें डोनेट की थी. so yes. ओके अभी आप लोगों ने तो हमारी थ्योरी सुन ली. अभी नाउ I would like to welcome our Honorable Major Dr. C.S. Sanghvi sir, and sir will give you the small glimpse of law. Sir, please. Sanghvi sir. I think Shruti, sir is having. Sir is here. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. Very good evening to all of you, and on behalf of LD, I welcome all of you to this platform and to the LD College of Engineering. Shruti. Yes, sir. All of them are from the first year, no? Yes, sir. Most of them are first year. Most of them. Yeah. Okay. Yes, sir. Okay. So first of all, welcome to LD College, and I think आपको अभी चांस नहीं मिला है LD में आने का. Otherwise, you will feel the vibrancy of the campus. And friends, जब भी आप कॉलेज में आओगे तो आपको यहाँ का जो डायनेमिक्स है कॉलेज का वो आपको
that you can feel. And I tell you, LD College basically meant for the excellence in technical education. तो आपको academically तो strong होना है, लेकिन parallelly आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना टैलेंट बता सकते हो, या यू कैन अपनी शौक या अपनी हॉबीज जो है उसको आप एंटरटेन कर सकते हो। तो जो ये जो ला का प्लेटफॉर्म है, दैट इज वन ऑफ इट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक बंदा जो कॉलेज में आता है वो पढ़ेगा तो सही, और ये पढ़ने के अलावा वो बंदा क्या करता है वो ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जब नाउ इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में द मेन चीज ये है कि एकेडमिक्स में यू हैव टू बी स्ट्रांग, दैट इज फाइन। अलोंग विद दैट आप पेरिफेरल एक्टिविटी, आप इनके साथ और एक्टिविटी क्या करते हो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कैंपस आपको वो प्लेटफॉर्म देगी, और ये जो ला का जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म कि जहां से आप, अगर आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबी ला जो एक्टिविटीज करती है उनके साथ मैच होती है, तो डेफिनेटली यू जॉइन द क्लब, और यहां से आपको काफी कुछ काम करने का मौका मिलेगा। बेसिकली जब भी आप कोई एक इवेंट करते हो, तो ये इवेंट के पीछे काफी सारी मेहनत होती है, और उसमें से आप मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेनी अदर पैरामीटर्स, लीडरशिप है, वो काफी कुछ सीखते हो। एंड देयरफॉर आप एकेडमिक्स के साथ और क्या क्या एक्टिविटी करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको जब आप यहाँ पे एलडी का एडमिशन लिया है, तब आपको पता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करना चाहता हूँ, या वो आपका गोल फिक्स होगा। तो ये जो पेरिफेरल एक्टिविटीज है, या तो ये जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन करोगे, तो वो आपके रिज्यूम या बायोडाटा को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपको प्लेसमेंट में काफी मदद मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी श्रुति ने बताया कि कौन सी एक्टिविटी होती है अंडर दिस प्लेटफॉर्म, एंड वहां से आपको देखना है कि ये सारी एक्टिविटीज में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। दिस सर्टिफिकेट, आप जो भी काम करते हो उसके लिए द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू गिव यू द सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगी। और आई टेल यू, द एलडी कॉलेज 1948 में बना, तो करीबन 72 इयर्स तो हो ही चुके हैं अभी। तो 72 इयर्स का मैं ओल्ड कॉलेज नहीं बोलूंगा, यंग कॉलेज बोलूंगा, क्योंकि उतना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारा। और इतने सारे एक्टिविटीज होती है कैंपस में, तो आई थिंक डेफिनेटली व्हेन यू कम टू द कैंपस यू विल एंजॉय दैट पार्ट। तो हमारा जो एल्यूमिनी का जो बेस है, एल्यूमिनी जो एलडी के जो पास्ट स्टूडेंट्स है, वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए। एंड आई टेल यू, आप कहीं पे भी जाओगे, आप अफ्रीका जाओगे, अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, सभी जगह आपको हमारे एलडी के स्टूडेंट मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाएंगे, और दे विल सपोर्ट यू, राइट। सो बेसिकली ये ज्यादा जरूरी चीज है कि आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी to associated with the one of the alumni association which is the strongest among all the colleges, ठीक है। तो I request कि अगर आपका इंटरेस्ट मैच होता है तो डेफिनेटली यू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, और वहां से आपको काफी सारी एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। और ये जो आपके सीनियर्स है, द सीनियर्स आर वर्क एज ए गाइड, आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। और वो जो कैंपस में कोई भी एक्टिविटी आपको वो जब गाइड करेंगे, या
when you become senior you have to coordinate certain activities. तो ला जो है वो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली है. So I request all of you to join this platform, join this club, and do activities of your choice. कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई के साथ कुछ नहीं करेंगे तो आपको पूरे जीवन में बहुत अफसोस रहेगा कि हमने सिर्फ पढ़ाई के अलावा कॉलेज में कुछ किया ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. पढ़ाई तो करना ही करना है और उसके साथ आपको काफी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, राइट? तभी आप ये कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओगे. और ये कॉलेज लाइफ है वो आपके जीवन का सबसे गोल्डन मोमेंट प्रूव होने वाला है. सो डोंट मिस आउट and join the clubs or the any other platforms of your liking. And मैं बता दूंगा La is one of the very good platform and a club you can join. So I hope कि आपका LD में स्टे बहुत बढ़िया रहने वाला है. You will enjoy and you will enjoy academics with all other activities. So all the best to all of you and join this club. I think this is a wonderful opportunity for you. Thank you. Thank you sir for your team presence in this meeting. Hope जितने भी freshers होंगे उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुनकर. Thank you so much sir. Thank you. Thank you. So yes, this was quite inspiring. I hope you all are enjoying. And our next, we will go with upcoming advancement. So हमने बोल दिया ये है ला वो है. So yes, you will find all these things on your path if you join La. So our very first coming advancement is internships. So guys, आपने technical career start करना है ना, then we require internship, and that's for sure. So yes, La will help you in getting your internship, and very soon La is going to launch an internship portal on its website, so that yes, you can find an internship in the technical field which is related to your interest, and this internships will be dropped by our expert alumni, right? So yes, this interface will be helpful to you and connect you all to the real industrial phases. नेक्स्ट अपकमिंग एडवांसमेंट इज इंडस्ट्रियल विजिट. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप थियोरिटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको इंडस्ट्री में तो जाना ही होगा कि हमें प्रैक्टिकल कैसे करना है. सो गाइस, अगर आपको या आपके फ्रेंड्स, यानी आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप आ सकते हो लॉ ऑफिस के अंदर, एंड आपको अगर जिधर भी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री विजिट करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है, सो वो आप हमें बोल सकते हो. देन वी विल ट्राई कि आपको हम इंडस्ट्री विजिट करवाने की हेल्प कर सकेंगे. Yes, we will help you with that. And our next advancement is webinar series. So La undertakes campus development. Yes, आपने जोયું हमारा. So for real time experience, La ने अभी recently form circulate किया था जिसमें students से उनके requirements collect की गई थी, and further we will be organizing webinars on these topics by industry experts. So guys, we will be taking your requirements. You can imagine, we will be organizing, or we will be trying to organize the things on your demand. Yes. Next advancement is workshop. Like आप जितने भी workshops attend करने वाले हो, करोगे आगे एकेडमिक पर्पस को लेके, बट उसके अलावा भी जितने भी जहाँ पे भी अगर आपको एक्सपोजर चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम स्टडीज एंड एक्टिविटीज, तो उसके अलावा भी आपके लिए हम वर्कशॉप कंडक्ट करवाने वाले हैं जहाँ पे आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले. Yes, our next advancement is technical and non-technical events. So
લા generally technical and non-technical events organize કરતું હોય છે. Like recently we has organized our Tech Fest, which included different activities like full stack development, personality development, electric motor vehicle workshop, and many other things. So આના through તમે તમારું technical knowledge enhance કરી શકો, and also non-technical activities like open mic, photography, treasure hunt, and gaming, so that you will get an opportunity to represent yourself in mass public and stand out as a unique personality. Next is Women's Wing. La is also coming up with Women's Wing in order to help ladies professor and students in all the possible ways. Next is virtual alumni meet and greet. આપણે જોયું કે pandemic situationsમાં most of things are going on digitally, right? So we will be organizing alumni meet and greet virtually, and you will be given chances to directly interact with your alumni and can have experience from them. So next, we will have a look on our website. Yes, we all know how difficult it is to find job and internship in today's scenario, especially of our choice. La understands this problem and has taken an initiative to resolve it. La is very soon coming up with internship and job portal on its website, जहाँ पर आपको opportunity मिलेगी internship और job find करने के लिए. Also, La invites all students to suggest about the company where they want to do job or internship. La would try its level best and try to provide them job and internship in particular company. La basically becomes the bridge between company and the students. Yes, So, and this is very helpful for students and all of us, right? And next, we will have a look on benefits of joining LA team. So આપણે જોયું vision statement, mission statement, activities, બધું જ આપણે જોયું, right? So now you will have a look on benefits which we all will have, or you all will have, on joining LA team. The very first is interaction with alumni and learn from them. Guys, alumni base of LDC, તમે સાંભળ્યું from the sir, right? કે LD ના alumni in Africa, out of India, foreign countries. So it is just amazing. So એમના કનેક્શન્સ થ્રુ તમને હેલ્પ મળશે, એમના કનેક્શન્સ થ્રુ તમને નોલેજ મળશે, પ્રોજેક્ટ્સ એન્ડ ટુ ઓલ. સો યસ, યુ વિલ હેવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડાયરેક્ટ connection, direct talk with them, and this will surely benefit you for your industrial career. Exactly. Now the second benefit is personality development. आप लोग तो बचपन से ही, आप लोग क्या, हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पर्सनालिटी सही होनी चाहिए, पर्सनालिटी बंदे की सही होनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है. तो या एब्सोल्युटली राइट कि अगर हमारी पर्सनालिटी सही है ना तो वी विल लैंड ऑन एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ एनीवन. सो गाइस, बी फोकस ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हमें बहुत जरूरत है आगे फ्यूचर प्लेसमेंट सेल में अगर बैठेंगे या किसी भी रेप्यूटेड पर्सन से अगर हम मिलेंगे तो उसके सामने हमें अपनी पर्सनालिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है वो सबका हमें ध्यान रखना होगा. और अगर ये सब सीखना है तो ला टीम को ज्वाइन करने से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. Yes, exactly. It's most important, right? So next is event management. So આપણે જોયું કે ગ્રુપ એક્ટિવિટી ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ પર કોઈ પણ એક્ટિવિટી થાય ને, it works on group, right? કોઈ બી પ્રોજેક્ટ હોય તો it works at group level. So yes, La will provide you opportunities to work with group, to lead a group for a particular event, to mentor it, to share your ideas, share your skills, to learn from other students, to learn from other things. And yes, this is going to help you a lot. Oh, exactly. Now, fourth benefit, that is communication skill. आप लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा ना कि एक मीम पेजेस पे कि एक बंदा है जिसके पास जीरो नॉलेज है बट उसके पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज, मतलब जीरो नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो बहुत हाई रेप्यूटेड प्लेस पे लैंड अप कर चुका है. सुना है कि नहीं सुना है किसी ने ये चीज? पढ़ा ही होगा मीम पेजेस पे. આજકાલ તો મીમ્સમાં પણ મેસેજ હોય છે. हाँ, obviously yes. Okay. हाँ, सही कहा. So अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रांग हुई ना, so you guys
can be a good communicator in front of anyone. आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको कैसे सीईओ के साथ बात करना है, कैसे आईएएस ऑफिसर से बात करना है, कैसे प्रिंसिपल या कहीं पे किसी भी बड़े रेप्यूटेड पोस्ट पे पर्सन के सामने अगर आप जाओगे तो आपको किस तरह खुद को प्रेजेंट करोगे और किस वे में आप उनके सामने बोलोगे, वो सब कुछ मैटर करता है। इवन प्लेसमेंट सेल में भी अगर आप बैठते हो तो प्लेसमेंट जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितनी, वो ये देखते कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना स्ट्रांग है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है ना तो आपकी टेक्निकल नॉलेज, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि टेक्निकल नॉलेज पे फोकस नहीं करना है, उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट हाँ टेक्निकल नॉलेज के सामने कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई तो इंटरव्यूअर्स तुरंत ही आपको हायर कर लेते हैं। क्यों दृष्टि, सही कहा ना? Yeah, exactly. Communication skill यार is the first. पहली वस्तु જેનાથી આપણને જજ કરશે ને, that is our communication skill. So yes, La will help you to enhance that. And our next benefit is opportunity to explore your skills. So yes, your skills, right? So તમને જે ફિલ્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જે ફિલ્ડમાં તમને ઈચ્છા હોય, ઇન્ટરેસ્ટ હોય, you can find opportunities in your fields. And for sure, this is going to benefit your industrial career. And I must say that opportunities and skills આ બધામાં કોઈ career કે academic barrier નહીં આવે, and that's for sure. And you all will be provided these benefits, all the opportunities, facilities, all the chances without any academic barriers. ओके, अभी आप लोगों ने बेनिफिट्स सब देख लिए, अपकमिंग एडवांसमेंट देख लिया, इनिशिएटिव देख लिया, ला एक्चुअली क्या है, उसके पीछे एम क्या है, क्या आपने हमारे सर की स्पीच भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको तो ये होगा, मतलब सबको होगा कि ये डाउट, ये जो भी बातें हैं वो सच है कि नहीं है। हम तो बोल रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस क्या है, सही कहा ना मैंने? यस और नो? Yeah. सब सो रहे हो क्या? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। Okay. अच्छा, अभी तक हमने जितना भी बोला आपने इजीली बिलीव कर लिया होगा, राइट? नो क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा ज्यादा हमसे अभी। Yes. Okay, no worry. Now I would like to call Mr. Siddharth Dalwania. He will share his experience with La to you guys. Siddharth Dalwania. Mr. Siddharth Dalwania, please. Thank you, Shruti, to give me a chance to say some words. Hello, everyone. I hope that you all are safe in your home and not getting bored with your ongoing lectures. Let me introduce myself. I'm Siddharth Dalwania, working as a ASE. Sorry. Okay. Let me introduce myself first. I'm Siddharth Dalwania, working as a AS in Accenture. I have also worked in TPO, Agaz, La, and many social activities I am doing. Let me tell you my experience with La. Actually, there is no team with La before I joined it. So we are willing to make new team. So what we do is that we organized one event named Agaz. By Agaz, we got a team, and who are organizing this orientation are the team you are looking. If I tell my experience, we were 7 friends and who joined La. Then we have to meet principal, senior vice president of our La. We have to meet CEOs to make a website of La. So in that process, I increased my ability to speak with the officials. Okay. I have to face many questions from principal, faculties, even from my team.
So eventually you will have you will have an ability to increase your critical thinking. Mm, okay, so it will increase your critical thinking, it will increase your communication. And if I tell about my interview, in interview your mark sheet doesn't speak anymore. Your words are speak more than your mark sheet. Okay, so I raised my word with the one quote of Gandhiji that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. I think you will join our club because it is a base club of our LDC. We will see in the next session also. Thank you. Thank you, Shruti. Thank you, Mr. Siddharth Dalwania, for his team presence in this meeting. Thank you so much. So, guys, are you enjoying? Okay, so here Shruti will continue with question and answer section. ओके गाइस, अगर आप लोगों को कोई कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, सो यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, or you can write in the chat box also. आई थिंक किसी को क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, कुछ डाउट नहीं है, कुछ भी मुझे तो लग रहा है सब पक्का सो रहे हैं। सही कहा ना, सुबह से लेक्चर अटेंड करो, शायद सोच रहे हो कि यहाँ पे भी क्या करना, राइट? नो, सो हाँ, ओके। હાલો yes જીટીએ ના 100 પોઈન્ટ કલેક્ટ કરવાના એ સમજાવો ને કઈ. okay so 4 વર્ષમાં હા GTU માં 4 વર્ષમાં you need to collect 100 points એના માટે ટેકનિકલના 50 અને નોન ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સના 50 પોઈન્ટ્સ કલેક્ટ કરવાના હોય એન્ડ એલડીમાં બી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ થાય છે અને તમે આઉટ ઓફ કોલેજની એક્ટિવિટીઝ પણ પ્રિફર કરી શકો જેના થ્રુ તમને એ એક્ટિવિટી કયા લેવલ પર થાય છે એટલા પોઈન્ટ એના હિસાબે હોય લાઈક આપણે એલડીમાં જોઈએ તો એલડીમાં ઘણી નેશનલ લેવલની એક્ટિવિટીઝ થાય છે સો એના માટે તમને 12 પોઈન્ટ્સ મળે પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે and if you are winning that તમને 15 points મળશે અને એવી રીતે ટેકનિકલ and નોન ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સના બાયફર્કેશન પર તમારે વર્ક કરવાનું હોય and you need to collect 100 points in 4 years so બહુ ટાઈમ છે એના માટે તો એની ફીસ કેટલી? એ તો ઇવેન્ટ પર ડિપેન્ડ કરે ને જે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હોય એ લોકો પર ડિપેન્ડ કરે यस दिग्नेश, आप 100 पॉइंट चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में कर सकते, क्योंकि इसमें देखो अभी तो बहुत सारे इवेंट्स आपके ऑनलाइन ही हो रहे हैं, सो टेक पार्ट इन देयर, हो सकता है। okay so now I would like to call Professor Mrunal sir to honor this session with vote of thanks. Good afternoon, everyone. I hope I am audible. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Good afternoon. Okay, wonderful. Yes. First of all, I would like to thank and congratulate the whole LA team who coordinated this session for the benefit of first year students. Okay, I congratulate all of you for your efforts for going the extra mile. Okay, because it is not expected out of them, but still they are doing it for your benefit. Okay,
तो इसीलिए। अच्छा, सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है कि हिंदी, गुजराती? फर्स्ट ईयर्स मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ। ગુજરાતી. ગુજરાતી, ઓકે ઓકે. જુઓ, હવે તમે લોકો અહીંયા એલડી માં એન્ટર થઈ ગયા છો. ઓકે, એલડી બહુ સરસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે. ઓકે, એલડી ટોપમોસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે ગુજરાતમાં, અને તમે લોકો અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છો, દેટ મીન્સ ઓલ ઓફ યુ આર ટેલેન્ટેડ. ઓકે, ઓલ ઓફ યુ હેવ ટેકનિકલ ટેલેન્ટ ફોર શ્યોર. ઓકે, અને જીટીયુ ની સિસ્ટમ એટલી સિમ્પ્લિફાઈડ છે, ઓકે, દેટ તમે 11th-12th ની સિસ્ટમ વોઝ ડિફિકલ્ટ. જીટીયુ સિસ્ટમ ઇઝ ઇઝીયર ધેન દેટ. That is what is my opinion. Okay, મને એવું લાગે છે કે GTU is much easier than board exams. Okay, so don't worry about your exams. Am I audible? आवाज सुनाई दे रहा है ना अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ. Yes, Okay, sir. so don't worry about your exams and stuff. Okay, because your GPA जो होता है, that should be the last worry. ઓકે, એના બદલ વધારે ચિંતા નહીં કરવાની. તમે અહીંયા આવ્યા છો, યુ હેવ ટુ થિંક કે મારું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થઈ શકે એલડીમાં. ઓકે, ટેકનિકલી તો એટ ધ એન્ડ ઓફ યોર બી તમારામાં અને તમારા બધા બેચમેટ્સમાં, ઓકે, ઇફ યુ આર ઇન મિકેનિકલ તમારા 150 બેચમેટ્સ છે, ઇફ યુ આર ઇન ટેક્સટાઇલ તમારા 30 બેચમેટ છે, તમારામાં અને તમારા બેચમેટ્સમાં કોઈ ફરક નહીં હોય ટેકનિકલી, બીકોઝ બધા પાસે બી ઇન એન્જિનિયરિંગની વોટ એવર એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી હશે. ઓકે, તો તમારામાં અને તમારા બેચમેટ્સમાં કોઈ ડિફરન્શિએટર હોવો જોઈએ. ઓકે, ડિફરન્શિએટર મીન્સ તમારા અને એમના વચ્ચે કંઈક તો ડિફરન્સ હોવો જોઈએ, કોઈ એક ડિફરન્સ હોવો જોઈએ, એન્ડ ધેટ ડિફરન્સ ટેકનિકલ જ હોય એની જરૂરી નથી. ઓકે, કારણ કે ઇમેજિન કરો કે તમે જ્યારે જોબ ચાલુ કરતા હો, તમે મેનેજર છો, જ્યારે તમે કોઈનું હાયરિંગ કરતા હો, ઓકે, ત્યારે તમે શું એક્સપેક્ટ કરશો એમાંથી કે એ માણસમાં શું હોવું જોઈએ? એનીવન કેન આન્સર. જો તમે મેનેજર છો અને તમે હાયરિંગ કરો છો, તમને 5 લોકો રાખવાના છે તમારી ટીમમાં, વોટ વિલ યુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ ધેમ? કેવા લોકો જોઈએ તમને? જે ગ્રુપમાં વર્ક કરે. ગ્રુપમાં વર્ક કરે. ઓકે, વન વન્ડરફુલ પોઈન્ટ. ટેલેન્ટેડ હોય. ઓકે, એટલે ટેકનિકલી સાઉન્ડ હોય. વર્કમાં જે પોતાનું બેસ્ટ આપે, પોતાનું બેસ્ટ આપે છે. કરેક્ટ. પછી કંપનીને ફાયદો થતો હોય, કંપનીનો ફાયદો કરતો હોય. કરેક્ટ કરેક્ટ. સી આ જો આ 4 પોઈન્ટ આવ્યા, 4 પોઈન્ટમાંથી ટેકનિકલ પોઈન્ટ કેટલા હતા? થિંક અબાઉટ. ટેકનિકલ પોઈન્ટ ખાલી એક હતો કે ટેકનિકલ નોલેજ હોવું જોઈએ. ટેકનિકલ નોલેજ તમને ના પણ હોય તો પણ યુ કેન બી એન એસેટ ટુ અ કંપની, પ્રોવાઇડેડ તમને ખબર છે કે લોકો સાથે કામ કેવી રીતે કરવાનું. ઓકે, કારણ કે 10 લોકો છે તો 10 લોકોની પર્સનાલિટી અલગ અલગ હોય છે, 10 લોકોનું કામ કરવાની રીત અલગ અલગ હોય છે. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા માણસ સાથે કઈ રીતે કામ કરવાનું. ઓકે, અને એ સમજવા માટે યુ હેવ ટુ વર્ક ઇન સમ એસોસિએશન. ઓકે, અને લા ઇઝ સચ એન એસોસિએશન જેમાં યુ વિલ ગેટ ટુ વર્ક વિથ લોટ ઓફ ડિફરન્ટ પીપલ. હું એમ નથી કહેતો કે લા એકલો ઓપ્શન છે, એલડીમાં યુ હેવ સેવરલ ઓપ્શન્સ. ઓકે, પણ લા ના થ્રુ ધ એડવાન્ટેજ ઇઝ કી યુ ગેટ ટુ બી ઇન ટચ વિથ એલ્યુમિની, જે એલડી ના ઘણા બધા છે. ઓકે, તો એલ્યુમિની સાથે પણ તમે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો છો. સેકન્ડલી, તમે ઓલરેડી બધા ફેકલ્ટીઝ સાથે પણ વધારે કોન્ટેક્ટમાં રહેશો, અને ખાલી તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના ફેકલ્ટીઝ સાથે તમે કોન્ટેક્ટમાં નહીં રહો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા જો કોઈ આઈટી નો સ્ટુડન્ટ છે, હું મેકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છું, આઈટી નો સ્ટુડન્ટ મેકેનિકલના ફેકલ્ટીને કોઈ દિવસ મળવા નથી આવતો, બટ થ્રુ લા યુ કેન કમ ટુ મીટ મી ઓલ્સો, યુ કેન ગેટ ટુ નો મી ઓલ્સો. ઓકે, દેન યુ વિલ ગેટ ટુ નો કે અચ્છા મારું વર્ક બધું મોડેલિંગ અને સિમ્યુલેશનમાં હતું, સો આઈ હેવ સમ આઈટી એક્સપિરિયન્સ ઓલ્સો. ઓકે, પાયથોન નું પ્રોગ્રામિંગ મને પણ આવડે છે, ભલે હું અહીંયા મિકેનિકલ ફેકલ્ટીમાં છું. સમજમાં આવે છે? એટલા માટે ઓલ ઓફ ધીસ કેન ગીવ યુ અ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પર્સ્પેક્ટિવ કહેવાય એને, પર્સ્પેક્ટિવ ટુ થિંક. અને પર્સ્પેક્ટિવ સમજવો અને પોતાનો ડેવલપ કરવો, એ તમારો ગોલ હોવો જોઈએ આ 4 વર્ષમાં. ઓકે, 4 વર્ષમાં યોર ગોલ ઇઝ નોટ ટુ ગેઇન નોલેજ. ઓકે, ખરેખર કહું છું, મને છે ને મારા ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં હું યુઝ્યુઅલી છોકરાઓને પૂછતો હોઉં છું કે વાય ડીડ યુ ચૂઝ એન્જિનિયરિંગ? તો ઓકે કે ના સર, મને નોલેજ ગેઇન કરવું છે. એન્જિનિયરિંગનો ગોલ શું હોય? તો નોલેજ ગેઇન. નોલેજ તો તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરશો ને તો દેર વિલ બી અ બેટર લુકિંગ પર્સન દેન મી, બેટર લુકિંગ ઓર બેટર હુ હેઝ અ બેટર લેંગ્વેજ દેન મી. ઓકે, જે તમને શીખવાડી શકશે. ઓકે, બટ સ્ટીલ યુ ચૂઝ ટુ કમ ટુ કોલેજ કારણ કે હિયર યુ વોન્ટ ટુ લર્ન હાઉ ટુ લીવ.
ઓકે, ઇન જનરલ. બરાબર, હું જો 5 લોકોને મને જો હાયર કરવા હોય તો હું એવા લોકોને સિલેક્ટ કરીશ જેમના સાથે મને કામ કરવાની મજા આવે પહેલી વાત. રાઈટ? વુડ યુ થિંક દેટ ઇઝ અ રીઝનેબલ થિંગ? કારણ કે હું 5 લોકોની સાથે કામ કરું, 5 ટેકનિકલી બહુ જોરદાર છે, તો એ લોકો સાથે કામ કરવાનો એટલો કંટાળો આવે તો તમે કામ કરશો? તમે એને હાયર કરશો? યસ ઓર નો? નો સર. કરેક્ટ. રાઈટ? તો એટલા માટે ઓકે, સો હાઉ ડુ યુ વર્ક વિથ ડિફરન્ટ, કારણ કે તમારું પણ એક ફ્રેન્ડ સર્કલ હશે, પણ બધા ફ્રેન્ડ્સ જે તમારું ફ્રેન્ડ સર્કલ હશે ને, બધા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં એવા લોકો હશે જે બધા સિમિલર થિંકિંગ હોય બધા. ઓકે, બધાની સિમિલર થિંકિંગ હશે. થ્રુ લા તમારે શું છે, થોડું ડાયવર્સિફાઈડ ગ્રુપ બને. ડાયવર્સિફાઈડ ગ્રુપમાંથી તમને વધારે શીખવાનું મળે. ઓકે, એટલા માટે ગેટ ઇન્વોલ્વ વિથ સચ ક્લબ, સચ એક્ટિવિટીઝ. ટેકનિકલી તમને કોઈ 7 ની ઉપર તમે જેટલું જીપીએ લાવશો ને બધું કચરામાં જવાનું છે. ઓકે, આ મારું સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખજો. 7 ની નીચે તમારો જીપીએ ના જવો જોઈએ આઈડિયલી, કે 7 ની, અને વાય 7? કારણ કે 7 ઇઝ યુઝ્યુઅલી ધ ક્રાઇટેરિયા, ઓકે, પ્લેસમેન્ટમાં બેસવા માટે. ઓકે, એટલા માટે 7 ની ઉપર જીપીએ રાખવાનો. 9.5 જીપીએ લાવવા માટે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવાનો. ઓકે, એના કરતા એટલો ટાઈમ તમે બીજી કોઈ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને તમારી ઓવરઓલ પર્સનાલિટીને ડેવલપ કરો. ઓકે, દેટ ઇઝ વોટ વુડ બી માય સજેશન ટુ ઓલ ઓફ યુ. ઓકે, મને વધારે ટાઈમ નથી બોલું. બાકી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે મારા માટે? ઇફ એનીબડી હેઝ એની ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ પણ લા માંથી પણ કોઈ પૂછી શકે છે, ફર્સ્ટ યર્સ માંથી પણ કોઈ પૂછી શકે છે. એનીથિંગ, volunteers or anyone can ask. Okay, if there are no questions, I congratulate all of the first year students for getting an admission into LD. Believe me, it is a very tough thing to because you are first in the race to get into LD. Okay, but LD માં ખાલી ટેકનિકલી ફર્સ્ટ આવવાની રેસમાં નહીં લાગી જતા. ઓકે, ટેકનિકલી ફર્સ્ટ આવવાની રેસમાં નહીં લાગી જતા. ઓકે, because that race is useless. After your graduation તમારો જીપીએ ખાલી ફર્સ્ટ જોબ વાળો પૂછશે, પછી કોઈ પૂછવાનો નથી. કારણ કે જે તમારો ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવવાનો છે ને એ પણ ટોપર નહીં હોય એની બેચનો. ઓકે, એટલે જો તમે ટોપર છો અને એ જો સપોઝ 10th 20th રેન્ક વાળો હશે તો પણ એ કે બહુ ઇમ્પ્રેસ નહીં થવાનો તમારાથી, ખબર પડે? એટલા માટે પણ તમે બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ, તમારા રેઝ્યુમેમાં કેટલી એક્ટિવિટીઝ દેખાય છે કે અચ્છા હું વોલેન્ટિયર હતો લામાં, કે મેં આ ઇવેન્ટ કોર્ડિનેટ કરી હતી લા માટે. ઓકે, મેં આ એક્સપર્ટ સાથે કોર્ડિનેટ કર્યું તો એમની વેબિનારની સિરીઝ કરી હતી અમે લાની સાથે. ઓકે, કે આવી કઈ ઇવેન્ટ કરી હતી જેમાં વી કોર્ડિનેટેડ વિથ there were 500 students who participated in our event and I was the organizer of that event. તો એના ઉપરથી પેલા ઇન્ટરવ્યુઅરને વધારે ખબર પડે કે અચ્છા એટલે આ છોકરાને લોકો સાથે કામ કેવી રીતે કરવું એ પણ આવડે છે, ટીમમાં કેવી રીતે કામ કરવું એ પણ એને આવડે છે. ઓકે, ટેકનિકલ વસ્તુ તો ઇન્ટરવ્યુઅરને ખબર છે કે યુ નો નથિંગ અબાઉટ ટેકનિકલ, because syllabuses are outdated. ઓકે, બધા સિલેબસ આઉટડેટેડ જ હોય છે. ઓકે, એટલા માટે ટેકનિકલ તો એને તમે કંપની જોઈન કરશો પછી એ તમને શીખવાડવાના જ છે પહેલા 2-3 મહિનામાં. ઓકે, સો દે આર નોટ વરીડ અબાઉટ ટેકનિકલ, દે આર ઓલ વરીડ અબાઉટ નોન ટેકનિકલ પાર્ટ, જે તમે આવા લા જેવા ક્લબમાં ડેવલપ કરી શકો છો. ઓકે, સો all I can say is take a decision wisely. La is not the only choice, but La is one of the best choices. Okay, એટલા માટે so make sure you make a wise decision, okay, of joining a club. અને ખાલી એક જ ક્લબ જોઈન કરવાનું છે એવું જરૂરી નથી, you can join more than one club. Okay, that is also an option. Okay, so with that I think I would like to thank all of our committee members once again, all of the student committee members as well as all of the faculties and our principal, okay, who graciously agreed to for this program for all of your benefit. Okay, and with that I would like to give it back to the host. Okay. Yes, sir. We thank you from our bottom of our hearts. It was so inspiring. Thank you so much, sir, for being My with pleasure. us. Always a pleasure. Yes. Yeah. थैंक यू सो मच सर। वैसे हम लोग ने भी चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म सेंड किया है जहाँ पे अगर आपको लास्ट ज्वाइन करना है, ये सब ओरिएंटेशन में सबको जानने के बाद यू गाइस वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन ला, देन वो गूगल फॉर्म प्लीज भर देना एंड हो सके तो अभी भर दो
lock yourself first. And you can share it with your friends too. If you are interested, come in groups. It will be helpful to you. यस एंड मैं अभी भी फिर से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी छोटा सा भी अगर डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड एलडीसी या कुछ भी इवेंट एक्टिविटीज, सो आप अभी अपना माइक अनम्यूट करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो. वी आर हियर, डोंट फील शाय. Hello. Hello. Anyone else? एक्चुअली इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में मुझे जानना था. Okay. So we all know કે આપણે હમણાં જેમ સરે કીધું કે આપણને ટેકનિકલ નોલેજ પણ જોઈશે, ટેકનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ થી યુ વિલ ગેટ ધેટ. ઓકે, ટેકનિકલ નોલેજ. સો તમને કઈ બી ટેકનિકલ નોલેજ માટે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટની જરૂર હોય, if you are need, then you can come in group to our office and yes, we can help you in organizing them. So તમારી જે પણ ઈચ્છા હોય, જે પણ પ્લેસ હોય, you can come to us with that and we will be helping you to organize it for your semester. Yes. Hello. Name. Hello. हाँ भावनिक बोलो. 100 પોઈન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું પડે? क्या क्या? 100 પોઈન્ટ મેળવવા માટે. अरे बताया तो था. अरे आप लोगों को ना से बहुत आप अभी तो लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें क्या कहते हैं ऑनलाइन हो रही है. सो आप लोगों के वर्चुअली ग्रुप हो में रही बहुत है. सारे ऐसे कंपटीशन आते जाते रहेंगे वर्चुअली, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है. पार्टिसिपेट करके आपको जो ई सर्टिफिकेट जनरेट होगी आप लोगों के लिए, सो वो आपको अपने पास सेव रहा है. सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करनी होती है जीटीयू पोर्टल पे, जिससे आपका पॉइंट काउंट होता है. ओके. एंड वन मोर थिंग भावदी, अगर आप पॉइंट्स के पीछे भागोगे तो मे भी बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा. सो चीजें सीखने के पीछे भागो, पॉइंट्स के पीछे नहीं. पॉइंट्स तो 4 साल है, बन ही जाएंगे. नहीं भी बनेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट हाँ सीखने वाली चीज अगर छूट गई ना पीछे, तो वो कभी वापस नहीं आने वाली है. आई एम गारंटी फॉर दैट. Okay, thank you. यू आर मोस्ट वेलकम. एनीवन? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बोलना नहीं पा रहा है तो वो मैसेज पे भी लिख सकते हैं गाइस, सो डोंट फील शाय. सो आई थिंक अभी किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं. दृष्टि क्या बोलते हो आप? Yeah, exactly. अगर डाउट नहीं हो then we can move ahead. Okay. So we are here with a small exciting game from you. So the game is you will show a picture or a series of picture and you have to guess the movie. Okay. આ બહુ જ easy છે, right? એકદમ સરસ તો રમી જશે તમે લોકોએ. So kinda that. So are you all ready? Yes. Yeah. Yes. So yes. So the first one is there on your screen. Write down in the chat box or you can unmute yourself. Movie name. Yes. Exactly. Very well said. Everyone, Sahil, Khushbu, very well said. Yes. सही है, सभी को पता है. The answer is Simba. And the next is right there on your screen. लगता है सभी सब हॉलीवुड के जबरा फैन है. Yeah, Bollywood rocks.
So the next question is there on your screen. Shanchit Sharma, you are right. No, Digesh, you are wrong. Yes, Kinjal, Kinjal. you are right. Right. It's Sanju. Exactly. Sanzu. Very good, Zoo. Darshil Popat. This is the next question. Guess it. उड़ता Okay, okay, guys. You can copyright, okay? 1-2 Copyright का issues 4. नहीं. Guys, show your enthusiasm level. Most of them answered 0. quite right. Yeah. दो हाँ. दूनी दो exactly you दूनी are चार. right. Okay. So the next question is there on screen. Guess something related to space. Yes, Very yes, good. yes. Yes, exactly, exactly. It's Mission Mangal. Perfect, guys. You are very smart. फर्स्ट ईयर वाले बहुत एडवांस है वाओ अच्छा Yes. रिस्पांस है बालाघाट Ball. बाला क्या बाला इट्स नॉट बाला Think, guys. रब ने बना दी जोड़ी Yes, 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 yes. Exactly, exactly. आके पायो ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Happy birthday, yeah. पीके ओनली वन गेस व्हाट अबाउट अदर्स Oh my God. हाउ कैन यू रिलेट दिस ओ माय गॉड None. साहिल यू आर राइट नो हार्ट इट्स नॉट भूतनाथ नो दिग्नेश दिस इज नॉट कंज्यूरिंग पार्ट 2 ऐसा आता है क्या पोस्टर उसका अरे हॉरर हॉरर क्या છે અહીંયા हॉरर नन वन कुछ नहीं है ओके द आंसर इज पीके नेक्स्ट प्लीज ओके नाउ अभी तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से हमारा सेशन एंजॉय किया होगा सही कहा ना हमने सभी को तो मजा आई होगी इधर यस अच्छा ठीक है तो अभी ये बताओ कि आप लोगों ने पूरे सेशन में क्या सीखा अभी तक यू गाइस अनम्यूट योरसेल्फ ओके ये रहने कुछ देते हैं आप लोग ये बताओ ओके कि आप ओके में से कितने लोग ला ज्वाइन करेंगे एनीवन ओके ओके सो हमने गूगल फॉर्म तो चैट बॉक्स में डाल ही दिया है तुरंत भर दो उसे
हार्द ने तो 3 बार भर दिया है, एक्साइटमेंट लेवल उसकी ज्यादा हो गई है। सही है हार्द। तो आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया होगा, ओके? या जो अभी भी बाकी है? थैंक यू दिग्नेश फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी सिर्फ 5 मिनट और फॉर्म भरने के लिए। जल्दी। And we will be circulating this link in your WhatsApp group too. So आप लोग भी फॉरवर्ड कर सकते हो। और हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना और उन्हें भी बताना कि ओरिएंटेशन में ये सब हुआ था। उन्हें भी एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज करवाना। थैंक यू हार्द। हमें भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। Yeah. So Guys, okay, we will end up here. So stay happy, and we wish you all the very best for your 4-year journey, upcoming days. थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे इस ओरिएंटेशन का पार्ट बने। Yeah, and enjoy your college journey. It's going to be amazing, guys. और 4 हम years लोग of जल्दी friendship. और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। Yeah. वी आर टू एक्साइटेड कि आप लोगों का वेलकम करें हम ला में। Yes, yes. You can leave now.